isotopes? फटाफट isotopes means take your count. We have already done. आपने हमको स्लाइड खोल के दिया था. जल्दी जल्दी isotopes. Any example? Example of isotope? कुछ नहीं, गणपति की छुट्टी में कुछ नहीं किया, खाली खाए पिए मोदक खाए और सो गए. Isotope means what? Atoms of same elements having same atomic number and different mass. Different mass number. Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. Then frequently we have given example of carbon 12. So 12C 6, 13C 6, 14C 6. So same number of proton but different number of neutron. This is another way. Or you can say atoms of same element having same atomic number and but different mass number. If you go with all this three, finally you will get average value as 12. So carbon 12 isotopes can be considered in order to calculate the atomic mass. Or abhi bhi this same method we are following. Okay, atomic mass of any element, you can compare it by carbon 12. So mass of that particular element is 1/12 the mass of carbon 12. याद रखना हाँ, mass, atomic mass of any element, it is 1/12 the mass of carbon 12 isotope. After that, the next thing, from that calculation, we have this table, this particular table. In this table, masses are given. Atomic masses of few elements are given. Now, in one of the school, teacher gave some important question. In that list, teacher asked students to prepare for the 1 to 20 atomic number and atomic masses. Atomic number तो आपको use करने ही है, but atomic masses we are not using frequently. So few example even we will solve. चलो book खोलो अपना notebook. Make table with 3 column. Element, atomic number and atomic mass. Elements, I will give you elements. Write down atomic number, symbol or notification is set, and you have to write atomic masses of those elements. Here X, A, Z, it is a representation. Z, it is what? Z is equal to number of proton or number of electron, whereas A is equal to P plus N. याद है ना आपको? Instead of P, you can also go with Z plus N. Meaning is one and the same. कुछ फर्क नहीं है. यहाँ पे हम लोग क्या बोले? P is equal to E is equal to Z. Here I have replaced P by Z. Meaning is same. Okay. Now take down few elements. Carbon, then इसमें से दे दूँ nitrogen, oxygen, then chlorine, and at the end hydrogen. Okay. अभी और एक चीज में आपको देना है मुझे. See. Atomic number, I know you will learn it because you have to solve problem based on atomic number. Again, I am repeating atomic mass. It is little bit difficult, so you can do one. You can use one equation, but it is only the rough estimation. Huh? Accurate value आपको सारे elements की आने वाली नहीं. So that equation is 2x लिखने से बेहतर है मैं लिखती हूँ 2z and here 2z plus 1. This is for even and this is for odd. So find out the atomic number Z value. It is whether even or odd, and according to this formula you can put values. This is for A calculation. But this is rough. हाँ? थोड़े elements में आपको difference आ जाएगा. चलो करो. Hydrogen. Carbon, nitrogen, oxygen, chlorine and hydrogen. Start writing. किसको write कर रहे हो? Copy करके नहीं करना है. Do it by your own. First write down value of Z. Copy मत करो. Don't copy. What is value of Z for carbon? Atomic number? हाँ? Well, atomic number of carbon. इसलिए मैंने तभी भी बोला था. You learn that 1 to 20 element with name,
सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर याद है ना, बताया था ना मैंने. कार्बन इट इज 6, नाइट्रो स्पेलिंग भी मैंने रॉन्ग लिखा. नाइट्रोजन इज 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17, हाइड्रोजन 1. ओके, घाई गड़बड़ का काम ऐसे होता है. Actually, regularly I am directly coming from school, but today I went home, kept my bag, and from there I came. और मेरे को लगा 4:30 का पीरियड. 4:30, 4:30. I thought it was of 4:30. But these values are rough estimation, हाँ. Accurate value आपको नहीं, किसी element, not for all elements, for few elements. हो गया, done. हम नाइट्रोजन का ए का वैल्यू 15 होगा. अब लिखो, हम चेक करेंगे. First you write down whatever values you are getting, now you write it down. क्या उसमें हसरत की क्या बात है? When you have your exam, first term exam, 18 of this month. हाँ. Topics first 2. Yes, this chapter is not is coming. First 2 topics. So we will complete. हो जाएगा. Means total 3 topics. बराबर है ना? First 2 and this third. पूरा नहीं आ रहा मैम, पूरा चैप्टर. हाफ थोड़ा सा. हाँ, 2 टॉपिक्स आ रहे इसमें से. कौन से? वो पहला वाला रहेगा. अच्छा तू कर कैलकुलेशन. आपका कैसे हो गया सब? मतलब हो गया एग्जाम. कब एग्जाम? तो एग्जाम अभी अक्टूबर में तो हो जाएगा. 2 टॉपिक्स और 3 टॉपिक्स और फुल सिलेबस. Only 4 are there ना? एक वही 4 फिर 6 सेमेस्टर में आएगा. हाँ, इनका कैसे? अच्छा आप पहले आप पूरा करो, उसने कैलकुलेशन कर लिया. आपका हो गया कैलकुलेशन? बेटा आपका हो गया? दिया. तनिष कैलकुलेशन डन. ओके, लेट्स स्टार्ट. 6 even or odd? Even. So what is answer? 12. 7 और आपने जो आंसर निकाला है ना, as per this calculation, let me know that exact value मैं आपको बता दूँ. इसका आंसर it is 15 as per this calculation. Okay, for this one you are getting 16, for this you are getting I think 35, and for this कितना मिल रहा है? 1. 2 into 1 is 2. 1 is even or odd? Odd. 1 is even or odd? लेकिन मार्क्स अरे वाह, मुझे पता है इसका भी आंसर हमको 15 नहीं मिलता. मैंने पहले ही बोला था रफ है ये. समझ में आया ना? 1 is even or odd? Odd. आंसर कितना आ रहा है? 3. अच्छा, बट यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बोला है कि रफ है ये फेयर नहीं है. So this is correct. Here we are getting 14. This is correct. This is 35.5 and this is 1. ये एक्चुअल वैल्यू बराबर है ना? करेक्ट है ना? Starting में in beginning only I told ना, this is only for the rough thing. See here there is minor difference. Even here there is difference of 1. But in case of hydrogen it is 3 and 1. पर हाइड्रोजन के हमको पता है हमारे पास में ये भी है ना, आइसोटोप्स. ये है ना? याद आया? बात बहुत दिनों से आ गई. नहीं समझ. अगर एग्जाम में एक कैलकुलेशन से आंसर निकलेगा तो चलेगा. एग्जाम में अगर आया ना तो आपको वो इक्वेशन यूज नहीं करना है, ये रेक्टिफिकेशन करके जाते हैं और टीचर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग वाला नहीं पूछते. ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था कि इन केस इफ यू आर हैविंग दिस फार्मूला व्हाइल अप्लाइंग बी केयरफुल बिकॉज़ फॉर ऑल एलिमेंट masses are not same as per this formula. It is only rough one. तो ज्यादा आपका इधर-उधर भटकोगे नहीं, you will be on some proper track. Understood ना? चलो, otherwise you have to use the same value. Then how do atoms exist? ये वाला एक चीज है जो आपने already you have done in I think experiment topic number 1 or 2 I don't remember, but one एक छोटा सा example मैं बताती हूँ. I will not take that activity. For example, if you have 100 ml of water,
Huh? Consider, assume that, visualize that you are having 100 ml of water in one beaker. Huh? You have added 10 grams of sugar in that beaker. 10 ग्राम ऑफ शुगर डाल के आपने उसको डिसॉल्व कर दिया. 10 ग्राम शुगर डाल के उसको स्टर करके you dissolve it. From that 100 ml of water, you took 10 ml of solution and poured that solution in another beaker containing again 100 ml of water. Okay, पहले वाले में we have added 10 grams of sugar. From that solution we took 10 ml water. We transferred that water in another beaker containing 100 ml of water. Whether that second beaker solution it will be sweet or it will remain tasteless like water. Tasteless or sweet? Tasteless water. टेस्टलेस ही रहेगा, उसका टेस्ट नहीं बदलेगा. यहाँ से हमने शुगर का क्वांटिटी बढ़ा दो, उसको मीठा बनाना है. You want me to do that? Okay, चलो ऐसे करते हैं. So this beaker it contain 100 ml water. Okay, in this I have added 50 grams of sugar. Okay. Now solution I have prepared, sugar, water. From this I will take 10 ml of solution and transfer this solution in again 100 ml of water. Whether this water will be tasteless or little bit थोड़ा सा. Okay. अभी ये वाला जो थोड़ा सा है इसको मैंने और 10 ml लेके दूसरे में ट्रांसफर कर दिया. 10 ml which again contain 100 ml water. होगा ना, लेकिन होगा ना, थोड़ा तो रहेगा ना टेस्ट, उसको रहेगा ना. तो this I have added 50 grams of water in 100 ml. 50 grams of sugar in 100 ml of water. Okay, उस sugar के अंदर there are many crystals. Many crystals, okay, छोटे छोटे बड़े बड़े crystals रहेंगे. These crystals contain many particles. These crystals contain many particles. मैंने ऐसे selectively I have not taken one particle, two particle की तो मैं कर ही नहीं सकती. Hardly what I can do, I can take 1, 2, 3 crystals, but particles can I pick them? No. Okay, one more thing. See, this is for example, this is my compound sugar, which is made up of particles, and again these particles are made up of atoms. These particles are made up of atoms. So can we see here atom? Can we see atoms here? No. Can we see atoms here? Can we see atoms here? But we can taste that solution as a little bit slightly sweet right now. So in order to make this compound, this substance जो भी हमने लिया है, तो it is made up of tiny particles which are known as atom, and these atoms they are bonded together. They are chemically bonded together. Okay, and when we say they are chemically bonded means which bonds are possible there? Which 3 bonds हो गए ना, at least 2 we have done ना. कौन से बॉन्ड होते हैं? Chemical bond. Types of bond. Types of bond. Types of bond. Transfer of electron, sharing of electron. By these two process, which bonds are formed? See where you all are. क्या किया? कुछ स्टडी नहीं करके आए तुम लोग. कौन से केमिकल टाइप्स कौन से बॉन्ड के? टाइप्स ऑफ बॉन्ड याद नहीं है? क्यों? मैंने तो मम्मी को बोला था ये तो और अच्छे से मार्क्स लेगी और अच्छी पढ़ाई करेंगे. टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी नहीं बोले. मम्मी क्या बोलूं मम्मी को नेक्स्ट टाइम? वो तो बोलेंगे क्या है, आपने तो वर्ड्स दिए थे.
हाँ नहीं याद है ऐसे नहीं चलेगा ना. This is not expected from you. Types of bond: कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और मैंने बोला भी ट्रांसफर, शेयरिंग, बोला ना. अब ये दो टर्म्स आई हैव यूज ना. नो अभी जस्ट किया ना मैंने. तो chemically bonded means what? Chemical bonds are formed and these bonds are covalent and ionic bond. So when we are saying atom, this atom they are not existing in the free state. कौन सी बेस पर है कौन? मैं एक्सप्लेन करी जो मैं एक्सप्लेन करी वो वर्ड्स तुझे वहां पे कैसे मिलेंगे. यू विल गेट केमिकल बॉन्ड्स मिलेगा. देखो वो टर्म है वहां पे. केमिकल बॉन्ड्स करके टर्म है वहां पे. वो कहां पर आता है? कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? नहीं है एटम्स हमारे मॉलिक्यूल्स में नहीं है. Are you out of your mind? I am not teaching you how chemical this covalent and ionic bond are formed. I am explaining you how atoms are bonded together. जब मैं ले जाएगा ना मैं बता दूँ. ये देखो what is a molecule, उसमें है ना लिखा हुआ है two or more atoms that are chemically bonded. मिला two or more atoms are chemically bonded. Got that term? Chemically bonded. Understood? Chemically bonded means what? Two term. Which bonds are there? Two or more. Covalent bond or ionic bond. Understood the meaning? Okay. So what I want to tell you is that when we are saying how atom exists, atom does not exist in the free state. It is in the chemical form. It is in the bonded form, and these bonds are chemical bond. अभी कितने एटम, कौन से एटम कैसे कंबाइन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन you can go for ionic bond or you can go for the covalent bond. You can go for monoatomic, you can go for diatomic depending on the number. So looking at this particular picture, existence of atom, it is free. हाँ या ना? Existence of atom is free. तुमको दिख रहा है एटम? कभी तुमको दिखा है चीनी में एटम, शुगर की क्रिस्टल में एटम दिखा तुमको? मेरे को आज तक नहीं दिखा. चश्मा लगा के भी नहीं दिखा. तुमको किसी को दिखा है? दिखता है? नहीं दिखता. क्यों नहीं दिखता? You have already learned ना indivisible, invisible. It is visible but not with our naked eye. You need high defined microscope in order to see that things. And nowadays it is also possible. Not with our naked eye. क्योंकि हमारे आंखें तो इतने high defined अभी तक हुए नहीं है. दिन पे दिन they are becoming weak and weak, poor and poor. बराबर है ना? So atom whether they are exist in the free state? No. इतना याद रखना. Next write down heading. What is a molecule? This is very important. हाँ, यहाँ पे आपको बहुत कुछ लिखना भी है, समझना है. What is a molecule? So what is a molecule? Simple example I will give you of two different types of molecule. One is H2, another is HCl. अगर आपको चाहिए तो और ले लो, NaCl or NH3. These are the example of molecules. Okay. Now in this, if you go with the simple one, what you see here? क्या है इसमें? H2. 2H है. This 2H they are bonded together to form H2. This bond in terms of our atoms they are chemically bonded. Chemically bonded means अभी bond मतलब क्या है? Ionic और covalent. Okay, so it may have either ionic bond or covalent bond. अगर आपको आंसर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है. Otherwise, for time being,
These two hydrogen atoms are bonded together. So molecules is what, how you can define when two or more atoms, write down, when two or more atoms are chemically bonded together, that is tightly held by attractive forces. Tightly held by attractive forces. यहाँ पे आप margin में please write down this examples. Please write down this example. This will help for the further explanation. Hydrogen, HCl, NaCl, NH3. Write down all these examples. So molecules means what? Molecule, two or more atoms, they are bonded together. Chemically bonded together. Chemically bonded का meaning, you are aware of that meaning. उधर से छोड़. Otherwise in margin write down what is meaning of chemically bonded. Margin में कहीं पे तो top पे लिख के रखो. Chemically bonded means either ionic or covalent bond. So this is one part of our molecule. Write down next one. A molecule can be defined as smallest particle of an element or compound capable of an independent existence and shows properties of that substance similar property of the substance. Put full stop and write. Atoms of same element or different elements can join together. Atoms of same or different elements join together to form a molecule. Now this many things we have about a molecule. Okay, one by one फटाफट देख लेंगे with respect to example. हो गया आपके सारे पॉइंट्स लिख के? Done? जरा गर्ल्स जरा भी फास्ट उतना ही लिखो, आगे का नहीं लिखना है. मैंने वॉल्यूम के अंदर एक लिख रहे हम लोग. क्या? जो लिखा है वही लिख रहे हैं हम लोग. हाँ, लेकिन पूरा डिटो नहीं, थोड़ा मॉडिफिकेशन है. बराबर है ना? Now for molecule, the first one is two, three or more than that are atoms are joined together. Is it correct? We have this many of example. और भी है, चाहिए तो आप ले लो. So in order to form a molecule, you can have either two atoms, you can have three atoms or more than that. If you are going with
इथेन C2H6 है ना, कितने एटम्स हो गए 2 and 6 8 atoms. So you can have 2 3 or more than that. So first point is clear. Okay, it is the smallest part molecule, it is the smallest part of the compound. For example, if you are having hydrogen gas, ये ऐसे पूरे container में if you are having hydrogen gas, okay, now this is complete, this cylinder it is completely filled with hydrogen gas. One part, if you take one molecule which is having formula H2, and this molecule will have property similar to the gas which is present in that cylinder, बराबर है ना, ये कुछ अलग है। आप माचिस के बॉक्स में का एक स्टिक निकालो, that stick will show the property similar to that remaining sticks which are there in the matchbox. Am I right? Or it will show different property similar. चलो next one. Then similar properties of the substance. Yes, they are showing the similar property. Atom of same or the different. Now here we have many example. Okay, same or different element which is coming under this example, बता दो मुझे, under this particular point. Atoms of same element and atoms of different element. This all are molecules. Same element is first one. Same element is first one. So two hydrogen atom H and H. Two hydrogen atom. Second is H and Cl. These two are different. Two different atoms are bonded together to form a molecule. Here again Na and Cl different. So our part for the molecule is either the same or different. Understood now? Or if you have this one O2. O2 is what? Oxygen. Same atoms or different atom? Same. How many atoms are there? Two. Two. So the number of atom in a molecule is known as, next part है atomicity. देखो वहाँ पे number of atoms. Last sentence चल. हाँ पता वो नीचे लिखे ले. Last point में atomicity. Last point क्या है? Atomicity है ना? Number of atom. Their example is same one. So number of atom present in the molecule is known as atomicity. If one atom is present, monoatomic. Two atoms are present, diatomic. If there are three atoms, then it will be tri. And for four, it is tetraatomic. This is oxygen molecule, which is diatomic. Which molecule is this? नहीं, नाम क्या है? No. Oxygen is O2 ना. How this and this both can be oxygen molecule. एक कोई तो oxygen molecule रहेगा. कौन सा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? This or this one? Two. Then what is this? That's oxide. अच्छा, क्या हो गया? हाँ, दो से कॉपी मत करो. It is ozone. Monoxide. It is ozone. What is formula of monoxide? We have done before vacation. Carbon monoxide. What is formula? Carbon monoxide. What is formula of carbon monoxide? क्या है formula? हाँ. बेटा last bench. Formula of carbon monoxide. Carbon symbol. C. Oxygen symbol. Carbon monoxide. मेन तुम्हारा खुला नहीं है अभी तक. इसे बोलेंगे गणपति से बाहर नहीं आए, ऊपर से फिर से 3 दिन की छुट्टी पड़ेगी. तुमको क्लास है? You have class? Yes. Tomorrow, day after Wow. tomorrow, which class? English. हाँ यहाँ पे. So next I done atomicity. अंकल आपका कोई क्लास? Atomicity I have many classes. जाओगे आप? Where? 12 क्लासेस. Yes. आप फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करोगे? No, this Eid is not for celebration. We are not celebrating birthday. Birthday? In our community, we are not celebrating birthday. It is birthday of our Prophet Muhammad. Atomicity. Write down definition. आप लिखोगे ना? Easy है. Atomicity is what?
Number of atoms present in molecule. Number of atoms present in the molecule. Okay, number of molecules मत करना बेटा. मॉलिक्यूल्स के लिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे. देखो जरा, एटॉमिसिटी मतलब एटम से आ रहा है ना. सो एटॉमिसिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. देयर यू कैन गिव एनी वन ऑफ एग्जांपल ऑफ योर चॉइस. यहां पे ये वाला भी दे सकते हो. हां, इसमें और एक चीज बतानी है, पहले आपको एटॉमिसिटी का डेफिनेशन पूरा कर लो. मैम तो इसका अगर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल molecule wala concept, it is clear now. There is no doubt in molecule. How molecule is formed? Examples are there. देखो, two or three atoms, they are chemically bonded. Okay, and that molecule is showing similar property. Okay, then next one, और भी है ना उसमें? Different kinds of This molecules which are obtained, they may be of same atom or from the combination of other different atom. Okay, then you can give example. जो भी example चाहिए आपने, बहुत सारे example है. Similar वाला एक H2 दे दो. Similar वाला you can give halogen also. O2 वाला भी दे सकते हो, Cl2 भी दे सकते हो, halogen वाला. Okay, चाहिए तो नोट डाउन करके रखो आपके वॉल्यूम में. जहाँ पे आपने सिमिलर लिखा है ना, देयर राइट डाउन, अंडरलाइन एंड राइट डाउन. H2, O2, H2, O2, Cl2, और in short you can write X2. और भी है. चलो. Now for atomicity, on right hand side there is one small table, page number 43. This table is for non-metal. Quickly make that types of elements. ये वाला types of element, name and atomicity. Types of element करो, name करो, atomicity we will write. Don't copy from there. 3 columns है ना, उसमें से 2 पूरे करने हैं. First 2, last one we will discuss. चल चल जल्दी कर, फटाफट हाथ चला. हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? ऐसा ऊपर से लाइट मोड पे कुछ नहीं है ना? ठीक है, चल दो. इतना you want that table. So next time you bring scale. This is our last topic now, girls. हाँ, girls को इससे पूछ नहीं ना. Then last year. क्या किया था? Last topic in the sense atoms and molecule, ये last ही मुझे पूरा करना है ना. Fourth वाला हमारा already done. First two cell has completed. Right now, still part is there. I know it will take one period में होना चाहिए. और ये वैलेंसी वाला राइटिंग फॉर्मूलास हमने बताया है शायद. How to write down formulas, है ना? जरा फटाफट. फर्स्ट वन argon, second helium, third oxygen, fourth hydrogen, fifth nitrogen, sixth chlorine, 7 phosphorus and 8 sulfur. Okay, done. Chalo, now let us see atomicity. If you remember, in while studying structure of atom, I have shown you periodic table. याद है, मैंने आपको periodic table बताया था. In that periodic table we have discussed zero group elements: argon, helium, neon, and I have said they are chemically inactive. They are not reactive. They are not taking part in the chemical reaction. What is the reason? What is the reason? They have sufficient atoms in their sufficient outermost shell. It is completely filled. Yes. Okay, sufficient नहीं बोलते. They have outermost shell is completely filled. Okay, हाँ sufficient है. लेकिन जो term है ना उनका, वो मैं term. Okay, so whether they will take part in any chemical reaction? No. No. And if they are not taking part in the chemical reaction, they will be in this diatomic, triatomic state.
होगा क्या? हाँ या ना? होगा? No. For example, if you have helium with atomic number 2, yeah, better because 2 He. Okay, it contains duplet. Outermost shell it is completely filled. So whether helium react with any other atom होगा रिएक्ट. अगर वो रिएक्ट होता है, फॉर एग्जांपल, हाँ, इफ हेलियम इज रिएक्टिंग विथ मेटल X, any other element X, so it will be in this form. But as it is not reacting, and so there is no need to show one more atom, it will be in monoatomic state. And in short, all halogen atoms, noble gases, they are in monoatomic state. हेलियम, नियॉन, आर्गन, ये पहले तीन तो याद रखेगा. देखो फर्स्ट वन आर्गन, लिखो आर्गन एज इट इज नोबल गैस, इट इज मोनोएटॉमिक. ओके, कुछ पूछना है बेटा? कुछ बताना है? समझ में आ रहा है ना? श्योर ना? देन हेलियम, it is again a noble gas, so it will not combine, it is monoatomic. ऑक्सीजन, जस्ट नाउ वी हैव डन ऑक्सीजन. क्या फॉर्मूला है ऑक्सीजन का? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? O2. तो लिखो वहां पे डायटोमिक. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? ये तो मैंने खुद लिखा था यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन. सी दैट हाइड्रोजन इज देयर, इट इज मोनोडाइट्राई. क्या है, कितने एटम्स है उसमें टोटल? हाउ मेनी? जस्ट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स. हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2. So it will be diatomic. देखो वहां पे diatomic. many atoms. Okay, poly means many. Then next one nitrogen. Tanish, liquid. लिखा है तो जरा शांति है. Nitrogen, it is diatomic. So what will be formula for nitrogen? N2. यहाँ पे हमने ये लिस्ट में we can add same type of atoms. बराबर है ना? Then chlorine, it is already there. How many atoms are there in chlorine? 2. So it is diatomic. Then next one phosphorus, tetraatomic. Tetra means how many? 4. Okay, tetra means 4, and more than 4 it will go under poly. So they contain many. Poly term का मतलब ही many. Okay, so next one sulfur polyatomic. चलो अभी next part में आ जाओ. Next part what है ना टाइम अभी तक? कितना टाइम है और? 5:50. हाँ चलो. Molecules of a compound, heading down. First write on heading. Molecules of a compound. Write down. Atoms of different element. पहले लिख लो फिर बताते. Atoms of different element किसका जगह चेंज करना पड़ेगा? Anyways, I am dictating and things are there on board. अगर कुछ चाहिए तो बता दे. Atoms of different elements join together. Different को underline करो. Join together in definite proportion to form molecules of compound. Again I am repeating, atoms of different element. Different को आपने underline किया है, right? Elements join together in definite proportion to form molecule of compounds. Now here I am having a list of the compounds. Okay, as per the definition or explanation, whatever you have written, which is applicable for this list? Atoms of different element joining as
definite proportion to form a compound. बराबर है ना? हाँ, to form a molecule or a molecule will further give a complete compound. So these are the example where atoms of different element they are joined and the proportion is also fixed. Proportion is also fixed. For example, instead of this one, if I go with water molecule H2O, H2O. So in H2O total how many atoms are there? Total how many are there? 3 atoms are there. In that 3 atoms, what is proportion of hydrogen as to oxygen? 2:1. हाँ, 2:1. ये मैंने एटम का proportion बोला है. If I go by mass, तो mass से कैसे इनका proportion हो जाएगा? Just now you have in beginning you have calculated masses ना? Hydrogen's mass, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2. Then we have 1 hydrogen oxygen atom 16. So if you reduce it, you will get 1:8. Check in your book whether the value is same or different. Same. Okay. So this is a number of atom and this is according to the masses. Now as per the point which is given, atoms of different element they combine in the definite ratio. If you change the ratio of this particular thing, हाँ, अगर हमने ऑक्सीजन का रेशियो चेंज किया, इंस्टेड ऑफ गेटिंग H2O you will get H2O2 peroxide. Peroxide, हाइड्रोजन peroxide. अगर हमने ऑक्सीजन बढ़ा दिया, then instead of getting water we can get hydrogen peroxide. Similarly, one more example I think we have done, carbon with oxygen giving carbon monoxide. Similarly, when carbon monoxide it is further treated with oxygen, it will form carbon dioxide. बराबर है ना? अगर हम फिक्स proportion में लग रहे हैं, तो if I want carbon monoxide only, I will keep this proportion 1:1. But if I increase the proportion, instead of carbon monoxide, I will get carbon dioxide. So whatever the compounds are there, they are formed by the definite proportion of that atom. If you are changing the proportion, molecule will change. Molecule will change. In this means what? Compound will change. समझ में आया एग्जाम्पल? सो इफ एनी एग्जाम्पल इज नॉट गिवन, अच्छा यहाँ पे टेबल ही दिया हुआ है, सो यू कैन टेक दिस टेबल, फटाफट ले लो, जरा फटाफट हाथ चलाओ प्लीज. कंपाउंड्स कंबाइनिंग एटम्स एंड रेशियो बाय मास. अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल? समझ में आया? कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? वी नीड एटम and the proportion should be fixed. If you are changing the proportion, you will get different. Okay? Simple example you can give, जो भी आपको याद आएगा. You can go either with water, you can go with this example also. ये सारे applicable example. And now you have to do only one thing. You go with this example. You can check this example from your textbook. Textbook में भी same है. Okay, no issue because teacher will first go with the textbook example, then with the reference book. तो आपको जो टेक्स्ट बुक में सही एग्जांपल लग रहा है यू टेक द. हां कुछ पूछना है? हां हम मोल्स किस फाइंड आउट करेंगे? मोल्स हो गया ना तुम्हारा फाइंड आउट करके करते हैं ना बाद में. इसमें है इस टॉपिक में मोल्स है. नेक्स्ट पार्ट है लास्ट वाला पार्ट. उसमें कौन से है? अब यू सेड यू हैव एग्जाम इन अक्टूबर ना? सेकंड पीटी. अच्छा सेकंड पीटी है. तो स्टडी क्यों नहीं किया फिर? स्विमिंग हुआ मैम खाली मॉलिक्यूलर मास सिखाया था. मैम बोला क्वेश्चन टेस्ट कर रहा है नहीं प्लाज्मा भी तो यही आया था. ये वाला क्लियर है ना? ये जाके घर पे रिवाइज कर रहे हो ना? श्योर ना? 10 आया आउट ऑफ 10 है. Out of 30, 10 आया. 13, 1 3. 3 मार्क्स का क्या था? मोल्स का ही. अच्छा से लास्ट या मार्क्स से मोल गाइस. टोटल कितना? 10 35.
Now you will get separate sections, huh? You're getting like that only, na? Yes. Physics, chemistry, biology, वो तीनों का भी आज ही बताया तू नहीं था हाँ अभी ऐसे ही पेपर आएगा आपका, so there will be not any confusion. This question is from physics, chemistry. ज्यादा confusion I think it is bio and this one chemistry. जब वो reaction वाला बात आता है, equation वाला आ जाएगा तो physics में confusion होंगे तीनों के। ये you don't want this now? No. Take any one example. You can go with a simple example. This is with respect to number of atoms and this is with respect to the atomic masses. Mass is 2:16 which can be reduced as 1:8. उसमें अपने बुक में 3 examples दिए हुए. Now the next part. Next one, but time नहीं हुआ करे. But good. अच्छा. Next one. What is an ion? Ion लिखो वहाँ पे ion और डाल दो dashes. What is an ion? काम टाइम्स करो. पे कर देना। क्या? टाइम्स पे। क्या हो गया? एक गिरा दिया। किसने गिराया? चलो रहने दो, गिरने दो, वो साफ कर ले. चिल्लाते थे। तू लोग चिल्लाने वाला है हाँ उसको चिल्लाएंगे ना, उसको डांटेंगे. तो क्यों चिल्लाएंगे? You are using pen. You say I have not done that. बेटा करो. What is an ion? Now in this the first sentence is given compound, it is composed of metal and non-metal. Okay. For example, if you are going with compound NaCl, if you are using compound NaCl, now in this NaCl, it is formed by which chemical bond? ये मैंने कराया था से. कौन सा बॉन्ड रहता है? Whether it contain covalent bond or it contain ionic bond? कोवैलेंट। Ionic bond. 50-50 है. Majority wins. Girls, covalent ionic. Covalent ionic. सर में दर्द कुछ समझ में ही नहीं आया. चुका मार दे रहे। Covalent answer is wrong. It contain ionics. Okay, it contain ionic bond. If you remember, I have shown like this: Ca positive, Cl, Na positive, Cl negative. I have started with the atomic number Na and Cl. What is atomic number of this one? यहाँ पे क्या नंबर है एटॉमिक नंबर? लर्न करो 1 to 20 एनी हाउ एट एनी कॉस्ट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट इट. 11 बुक में से देख के 11 एंड क्लोरीन 7. Okay, electronic configuration valency we have done. Electronic configuration 2. Out of 11, 2 and 8. How many are remaining? 1. What about this? 2. हाँ. 8. अच्छा मैथ्स. 2 8. How many are remaining? 7 are remaining. देखो प्लीज जरा कॉन्फ़िगरेशन में काम करो नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी. हाँ. So atomic number of sodium is 11 with electronic configuration 2 8 1. Okay. Chlorine 17 2 8 7. Now this Na you might be knowing it is in the extreme left of the periodic table. बताया था मैंने. हाँ लेफ्ट ने बताया था. So the element which are at the left of the periodic table mostly they are metals. Mostly they are metals only and they are electropositive in nature. Electropositive means they have क्या बोलेंगे अभी? They are very rich and they are always donating the electron. So on giving the electron, it will be converted as Na positive with electronic configuration 2A. Okay. Now this sodium metal, ये heavy जा रहा है.
नींद आ रही है, अच्छा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सोडियम, दिस इज सोडियम मेटल, राइट? On losing one electron, it is converted into sodium ion. यहाँ पे चेक करो, इसके कोई चार्ज है? Na contain any charge? No. It is neutral Yes. with electronic distribution 281. Here I have removed one electron as it is electropositive. Okay, this sodium metal, it is converted into metal ion with electronic configuration 2,8 because this is loss. Now the ion which carries positive charge, it is known as cation. Okay, similarly, this is on extreme right of periodic table. Right side elements, they are non-metals. कुछ याद आया periodic table? हाँ. They are non-metals. This is also non-metal. हमने यहाँ पे atomicity में भी लिखा है, देखो वहाँ पे मिला क्लोरीन diatomic, it is non-metal, मिला यहाँ पे अभी आ जाओ, फिर से वापस आ जाओ. So this is non-metal, non-metal, metal, non-metal. Okay, non-metal is having property, here it is positive, मतलब giving, loss. So what will be here? यहाँ पे क्या होगा? Gain. Okay, gain. Charge. Here it is positive. What charge will be here? Negative. Okay, negative charge. Now what will be electronic configuration on taking one electron? साथ है यहाँ पे. In order to complete stability, it need one more. So what will be electronic configuration? एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे डालो, क्या हो जाएगा configuration? बोलो. अरे जल्दी बोलो, मैं मार्क्स नहीं दे रही हूँ यहाँ पे. पूरा बोलना है. 2, 8 and 8. See here. यहाँ से मैंने 1 निकाल के I have added with this 7. So new is 2, 8 and 8. Now this is cation. So what will be this ion? This will be anion. इसका explanation आप लोग घर से पूरा करेंगे. So when we are saying ions, they are charged particles. And how charged particles are formed? By gain or loss of electron. By gain or loss of electron. चलिए तो ये शॉर्टकट में लिख के रखो, क्विकली लिख के रखो, जहाँ पे आपके वॉल्यूम में जगह रहे वहाँ पे लिख के रखो. राइट डाउन दिस एग्जांपल. मेटल, electropositive, loss electron. Non-metal, electronegative, gain electron. This is cation, this is anion. मैंने ठीक से लिखा है, आप लोग भी लिखो. Next class we will start with the next part, writing chemical formulas. और writing chemical formula शायद सर ने कराया है. This one. है ना? So no need to do this one. I will start with molar mass and mole concept. So that will be our last lecture from molar mass and mole concept. Then it will be done. आज वो नहीं आई. क्यों आई थी? अच्छी थी ना तबीयत? क्योंकि आजकल ये सब सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा चल रहा है ना सभी यहाँ पे. बेटा अगर ये पूरा नहीं हो गया, नहीं वो सुन भी नहीं रही. तुझे बोला नहीं हो गया. क्यों? कभी आया शाम ज्यादा हो गया. थोड़ा तो मुझे बोलती थी मेरा दे दे ना तुझे. आई एम नॉट गेटिंग कंप्लीट स्लीप. चलो एनीवेज, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी.